So good afternoon everyone. Welcome to today's session. And almost a week ho gaya. We have been postponing this, but now that it is today, that we'll be doing MCQs of January RBI circulars. Okay? So please tell me whether my voice is clear, and I hope the screen is clearly visible to all of you. Good afternoon everyone. आवाज आ रही है सबको? चलो ठीक है. सो वही नॉर्मल अपना एमसीक्यू वाला फॉर्मेट रखेंगे. आप सब लोग काउंट भी करते चलो. हाउ मच करेक्ट मार्क्स यू आर गेटिंग, हाउ मच इनकरेक्ट, and at the end marks. So total approximately we will be doing 85 MCQs. So I will go a little bit fast. ठीक है? आप लोग काउंट रखना and let's see how much we each guys perform and how much you remember. And we will be doing circulars from January only. तो जिस भी सर्कुलर में अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं या जो भी सर्कुलर का आपको क्वेश्चन लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा, मेक श्योर टू रिवाइज दैट सर्कुलर. प्लीज नोट इट डाउन. ठीक है? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द सेटलमेंट साइकिल फॉर ओवर द काउंटर ट्रेड इन कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन द सेकेंडरी मार्केट? वी आर ट्राइंग टू आस्क यू. So Nitin saying D. अच्छा. Sambar also saying D. Saptadeep saying A. तो देखो सत्यम, विजय, Saptadeep, all of you are correct. The correct answer is T plus 0 working day. T plus 1 जानबूझ के नहीं डाला. The correct answer अगर आप देखोगे, if you see the circular, it is mentioned T plus 1, T plus 0. दोनों में से कोई भी हो सकता है if you're trying to focus upon secondary market. ठीक है? Secondary market, all of you know, after primary issue के बाद, ठीक है, you buy and sell these securities in secondary market. So this is what the question is talking about. Let's move on to the next. What is the end use of funds raised through commercial papers and non-convertible debentures? मतलब उन दोनों के थ्रू जो भी कंपनी फंड रेज करेगी, व्हाट इज द एंड यूज केस? यस, ऑल ऑफ यू करेक्ट. ओनली फॉर फाइनेंसिंग करंट एसेट्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. व्हाई डू यू थिंक करंट एसेट्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज देयर? व्हाई नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं है? करंट ही क्यों है? रीजनिंग भी आनी चाहिए. ऑल्दो आपने रटा हुआ है, दैट्स फाइन, बट व्हाट्स द मेजर रीजन? यस सत्यम, करेक्ट. बिकॉज दीज आर शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज. शॉर्ट टर्म यूजुअली 1 साल के आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में ही रहता है. नेक्स्ट इज व्हाट्स द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप टू इशू सीपी अंडर द सर्कुलर? Question number 3 everyone. Yes, easy question. ठीक है? Applicability में अगर आप जाओगे तो if you focus on cooperatives and limited liability partners, 100 crores there must be net worth of them. Another easy question, what's the denomination of commercial papers? Commercial papers हम लोग किस minimum denomination में we can issue? बहुत बढ़िया, गुड. 5 lakhs और its multiples. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the settlement period for primary issuance of commercial papers and non-convertible debentures?
अब क्लियर हो जाना चाहिए. Primarily we were asking about secondary market, now we are focusing upon the primary issuance. तो primary issuance में what's the settlement cycle? So for those of you who are saying C are correct. T plus 4 working days because we are talking about the primary issuance. पहली बार जब these securities will get issued on the capital market. Next is which transactions are not considered for classifying an account as inoperative. माने कौन कौन से transactions अगर होंगे तो उसको आप inoperative consider नहीं करोगे. ध्यान से पढ़ो. We've studied ना, there were various, primarily two conditions were there. What's the correct answer? For those of you who are saying E are correct, ठीक है? It's not only कि bank induced charges are there, but even zero balance accounts where the government were providing these beneficiaries the benefits also. ठीक है? अगर वो इनऑपरेटिव कर देंगे तो ये बेनिफिट्स तो प्रोवाइड कर ही नहीं पाएंगे, तो सरकार का जो डीबीटी वाला कॉन्सेप्ट है वो फेलियर हो जाएगा, है ना. सो दैट्स व्हाई इवन दोस ट्रांजैक्शंस आर नॉट कंसिडर्ड एज इनऑपरेटिव. नेक्स्ट इज हाउ ऑफन बैंक्स अंडरटेक अ रिव्यू ऑफ अकाउंट विद नो कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजैक्शंस फॉर मोर देन अ ईयर. जितने भी कस्टमर के अकाउंट्स हैं, इफ देयर आर नो ट्रांजैक्शंस विद इन अ ईयर, व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनुअल रिव्यू और बायएनुअल रिव्यू और क्वार्टरली रिव्यू? Yes, correct. Annually is the right answer. What facility banks usually make available for activation of inoperative accounts or unclaimed deposits? Yes, correct. VCIP, Video Customer Identification Process. Okay. Next is what information should banks host on their websites regarding unclaimed deposits? क्या क्या चीजें बैंक को मेंशन करना रहता है? ध्यान से ऑप्शन पढ़ो and please do tell. So for those of you who are saying A is correct, because full name, address without PIN code and unclaimed deposit reference number, these are the three things that a bank should host on their website regarding unclaimed deposits. Next is what is the revised definition of bulk deposit for primary urban cooperative bank categorized as tier 3, tier 4. तो bulk deposit की नई कैटेगरी क्या है? I mean नया क्राइटेरिया क्या है? Yes, I hope this one was easy. Rupees 1 crore and above. Next, what is the revised threshold for scheduled commercial banks other than tier 3, tier 4? Simple, है ना? Correct. B, same as was the previous case. What must cooperative banks do regarding term deposits for resident Indian senior citizens? Senior citizens के लिए क्या करें? That the direction has already provided to urban cooperative banks. Logical है, application logic लगाओ. It's a most easiest question you can have. Yes, correct. Offer higher and fixed rates of interest compared to the normal. Next is what is eligibility criteria for appointing a deputy internal ombudsman by the regulated entities? हम लोगों ने criteria पढ़ा ही हुआ है, not only for deputy but also for normal internal ombudsman. What's the criteria? Everyone. 13th.
Pupu saying C, Shreya saying C, Rajshri also saying C, Vijay saying C, Vinay saying skip, Hindu saying C. Yes, the correct answer is C only. Okay. Serving officer not below the rank of DGM with at least 5 years of experience. ठीक है, सारी चीजें ठीक है. They are asking serving even also retired officer also. ठीक है, तो सारी criteria आपको clearly पता होना चाहिए. Do not miss on even single aspect. Next is what type of complaints do not fall under the purview of internal ombudsman. कौन कौन सी complaints आप internal ombudsman में नहीं दे जा सकते? 14th everyone. Yes, simple. ठीक है, ये सारी चीजें हैं complaints related to fraud, commercial decisions and also internal administration. Next question. What is the time frame within which final decision of the internal ombudsman must be communicated to the complainant? All of these things are, you might think that these are easy क्योंकि आप लोगों ने ना तो circulars पढ़े हैं, you know, आप लोगों ने circulars भी पढ़े हैं और आप लोगों ने just these MCQs you have also done. But make sure you do not forget these things in the examination because this will help you score very good marks in finance. That's, I'm definitely sure. Next is what criteria must be fulfilled by NBFCs to be covered under master's direction regarding internal ombudsman. NBFCs को क्या चीजें चाहिए? Sixteenth, everyone. What type of NBFCs can appoint internal ombudsman? That's what the question is asking to you. See the options, you'll be able to come up with the answer. देखो इसमें एक key aspect है that will tell you the essentiality of it. 16th, Rohit saying D, Satyam saying D, Vinay saying B, C, A, E, A. चलो. देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक कस्टमर इंटरफेस नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है किसी इंटरनल ऑम्बुड्समैन को बिठाने का, है ना. तो पहले तो आप ये सब हटा दो. फिर बचा एसेट साइज का. इफ यू लुक एट इट, दिस वाज द एसेट साइज क्राइटेरिया. सो ओनली एनबीएफसीज विद एसेट साइज ऑफ 5,000 crores and above having public customer interface is the correct answer. Next, under the master direction on internal ombudsman, who approves standard operating procedure for complaint redress formulated by regulated entity? What's the correct answer? Seventeenth correct answer is B. Yes, all of you are correct. Committee of the board handling customer service and protection. Internal जो बैंक का board है, ठीक है, that will, and particular committee of that board will handle it. Next is what's the time frame for conducting an internal audit of the implementation of master direction regarding internal ombudsman? Eighteenth, Rohit saying quarterly, rest all saying annually, others saying biannually. The correct answer is annually. Next is what's the primary purpose of auto escalation of rejected complaints to internal ombudsman? अब देखो इसमें obviously you can be very generic about it. आप बहुत सारी चीजें accept कर सकते हो as an answer. But you have to be very clear with respect to what was written in the master circular. उसी के basis पे question पूछेगा. Now tell me, what's the primary purpose of auto escalation? 19th, everyone. Yes, correct answer is
C, to provide an opportunity for a final decision by an independent authority. Circular देखोगे यही चीज लिखी है. That's what I'm saying ना. Even in schemes this also happens. आपको objectives देगा, 4 objective सही होंगे, 5वें objective है उसी के जैसा generic item लिख देगा. आपको लगेगा कि ये तो सेम ही है, फिर गलत कौन सा है. Next is which type of NBFCs are now allowed to use credit risk transfer instrument according to RBI. This is the keyword, now allowed. 20th, everyone. चलो, दिस माइट गेट कंफ्यूजिंग. देखो अपर लेयर तो पहले से था ही, ठीक है. अभी अलाउ कर दिया मिडिल लेयर को, बट फिर लीगल भाषा में जाओगे तो फिर दोनों ही अलाउड है. बट एटलीस्ट प्लीज रिमेंबर अपर लेयर एंड मिडिल लेयर आर बोथ अलाउड. मिडिल लेयर को अभी अभी अलाउ किया गया. तो इफ समवन हैज मार्क्ड दिस और दिस, बोथ कैन गिव यू करेक्ट मार्क्स, ठीक है. Next is what is the minimum common equity tier 1 capital required for NBFC upper layer to maintain? Apu saying D, Rohit saying D, Nathan also saying D. Yes, all of you are correct. 9% is the correct answer. Next is NBFC with how many branches are mandated to adopt core banking solution? 22nd. आसान क्वेश्चन है. There was this line with respect to this data present over there. है ना? Yes, correct. 10 is the right answer. Then let's go to the next question. Which NBFCs are considered systematically important NBFCs? Asset size कितना चाहिए इनका? It's not about demarcation with respect to tier system that we are talking about. We are talking about the systematically important NBFCs. Yes, the correct answer is B. Asset size of 500 crores or more. Next is what is the asset size threshold for non-deposit taking NBFCs to be considered for middle layer under the revised regulatory framework? हाँ 24th है. चलो, my mistake. Yes, the correct answer is 1000 crores. ठीक है, इसको 23 अज्यूम कर लो, वरना फिर बाकी सारे काउंटिंग भी आपको फिर एक एक बढ़ानी पड़ेगी. लेट्स कंसिडर दैट आल्सो 23. एक जिन्होंने सही किया वो एक एक नंबर बढ़ा लेना एंड में. ओके. 24th question. What's the regulatory minimum net owned fund requirement for NBFC microfinance institutions to be achieved by March 31st, 2025? Well done everyone. बहुत बढ़िया. Good. 7 crores is the correct answer. बहुत बढ़िया. ठीक है. I'm glad that all of you have comprehensively done circulars. I'm glad. Good job done. Next is how many state cooperative banks and central cooperative banks can an audit firm audit concurrently in a year as per the guidelines? Yes, easy question. 5.
is the correct answer. बहुत बढ़िया. Next is which organization prepares the list of audit firms from which banks can select their statutory auditors? Yes, another easiest question. Cooperative है, rural development, agriculture, तो NABARD जिंदाबाद. ठीक है. Next is what action should be taken in case of any serious lapse negligence by statutory editors in discharging audit responsibilities? Who should we report it to? Yes, correct. Report to NABARD within 2 months. बहुत बढ़िया. Next, what's the minimum gap required between any non-audit work undertaken by the statutory auditors for the appointing bank? 28th. एक बार बताओ, सारे के सारे क्या एकदम फाइनेंस में 25 में से 25 ले आओगे क्या? बहुत बढ़िया, गुड. करेक्ट आंसर इज 1 year. नेक्स्ट इज व्हाट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ tenures an auditor firm can be appointed, reappointed in the same bank without a break? कल ही 2 बार रिवाइज किया था. गुड, बहुत बढ़िया. देखो सर्कुलर से क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे और फेज 1 जीए इज सॉर्टेड. ठीक है, और फिर एफएम तो सॉर्टेड है ही. मैनेजमेंट में नंबर आ जाते हैं यार, फाइनेंस में यू हैव टू डू दीज थिंग्स टू गेट मोर नंबर. ट्वेंटी-9th एवरीवन. यस, करेक्ट आंसर इज बी, 2 years. ठीक है, एक बार ही रीअपॉइंट कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेक रहेगा. नेक्स्ट इज व्हाट शुड यूसीबीज रिड्यूस, व्हेन शुड यूसीबीज रिड्यूस देयर एक्सपोजर्स एक्सीडिंग द न्यू एक्सपोजर लिमिट्स सेट आफ्टर March 30th, 2020? कब तक रिड्यूस करके रखना है? So Shreya is saying C, Appu saying C, Shreya saying B, Nitin saying D, travel with SK also saying C. Yes, C is the correct answer by March 31st, 2024. These are just to confuse you. ठीक है, confusion के लिए घेर रखे थे मैंने. Next is what is the maximum interbank gross exposure limit for UCBs in terms of their total deposits? 50 बार डिस्कस किया था हम लोगों ने. ठीक है, सारे सबका आंसर सही होना चाहिए. व्हाट्स द करेक्ट आंसर? इंटरबैंक ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट कितना था? बहुत बढ़िया, 20%. Which of the following criteria must be fulfilled by urban cooperative banks to accept deposit from other cooperative banks? तो बेसिकली दे वांटेड टू बी फाइनेंशियली एंड साउंड वेल मैनेज्ड. ठीक है, तो वही वाले क्राइटेरिया है. व्हाट द क्राइटेरिया शुड बी? 30 सेकेंड एवरीवन. व्हाट अबाउट अदर्स? 3 लोग ही हैं क्या चैट पर? नितिन सिंह सी एंड डी. दो ऑप्शन कैसे लगाओगे? द करेक्ट आंसर इज सी. ठीक है, मेरे ख्याल से ई भी हो सकता है, राइट?
ऑप्शन में कुछ दिक्कत है, बट एटलीस्ट ऊपर के 3 देख लेते हैं. ग्रॉस एनपीए व्हाट वाज द रिक्वायरमेंट? 7%. मिनिमम सीआरएआर प्लस 1%, है ना, और नॉट लेस देन हाउ मच परसेंट? मिनिमम सीआरएआर कितना चाहिए एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को? अरे 1% तो इसका हो गया ना, मिनिमम सीआरएआर प्लस 1%, बट ओवरऑल सीआरएआर ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक is 9%. Next is what's the maximum individual housing loan per borrower for tier 1 UCBs? $33rd. Easiest question, 60 lakhs. Under which section of the Banking Regulation Act UCBs are restricted from granting loans and advances on the security of their own shares? What's the section? 34th. Everyone. देखो सेक्शन के भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है. इफ एनी सर्कुलर इज नॉट कंटेनिंग एनी फैक्चुअल डिटेल्स, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तो उसमें फिर सेक्शन बेस्ड न्यूज भी आ सकती है. सो KR Blue is very much right. Section 21A D is the correct answer. ठीक है, be very clear. देखो ऐसे सेक्शन 20 सेक्शन हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 20 सेक्शन comprises of various different sections. You have to be very specific under which section's authority that Reserve Bank of India have come up with this master direction. ठीक है, make sure to revise these things. आज आप लोग एटलीस्ट बाकी सब में एक्सपर्टीज आ गई है, तो सेक्शंस भी एक बार देख लो. एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है. और फिर मैराथन जब करेंगे तो फिर दोबारा सेक्शंस के क्वेश्चंस देख लेंगे, so that you guys are comprehensively done with these circulars. Next is which category of UCBs would be eligible for inclusion in the second schedule to the Reserve Bank of India according to Government of India notification. This. 35th. Yes, C is the correct answer. बहुत बढ़िया. How much should the CRAR be in relation to minimum CRAR requirement applicable to a UCB to be considered for inclusion in second schedule? Just like how we see in this case of financially sound and well managed. और इसमें क्या रहेगा? (36th) Rohit Singh B, Vijay Singh B, पप्पू सिंह डी बी डी बी. देखो ये दूसरा वाला है, ये पुराना वाला नहीं है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला थोड़े. करेक्ट आंसर इज डी, एटलीस्ट 3 percentage points above. Next is what is one of the criteria for determining the financially sound and well managed status of UCBs? Everyone. What's the correct answer? Pappu Singh C, Rohit Singh C, Saptadeep Singh C. Yes, C is the correct answer. Next is how much should the CRAR be in relation to the minimum CRAR requirement applicable to UCB for qualifying financially and sound well managed status? यहां पर आपको पुराना वाला कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, just focus on that.
What's the correct answer for this, everyone? ये तो आसान है. Nitin, why do you Nitin saying 38A? Basically CRAR को 1% और गिरा देंगे क्या? To make sure that these banks are financially well and sound managed. आप किसी बैंक को बढ़िया से कैपिटलाइज करने की कोशिश करोगे, why will you reduce their financial capital? So the correct answer is at least 1 percentage points above. Next is, how many professional directors should be on the board to qualify for the financially sound and well managed status? अच्छा, by mistake. चलो ठीक है, कोई नहीं. Everyone, how many directors can you have on the board? 39th, travel with SK saying B, Rohit saying B. Yes, B is the correct answer. At least 2 professional directors. Almost at the half stage of our session. ठीक है? Under which agreement are valid TRQ holders permitted to import gold into India? देखो ये तो आसान है क्योंकि इसके अलावा और कोई agreement हुआ ही नहीं है ना, तो this should be an easy question for everyone. और हर किसी के साथ तो कर नहीं रखा हमने. Yes, correct. 40 answer E. India UAE SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. So let's just have a little bit extra. So what's the target with respect to non-oil trade under this India UAE SEPA? Everyone, कितना टारगेट रखा हुआ है नॉन ऑयल ट्रेड का अंडर दिस इंडिया यूएई सीपा? बहुत बढ़िया, गुड. $100 बिलियन. बस यही सब चीजें याद करके रखो, इट विल हेल्प यू इनएविटेबली. नेक्स्ट इज, व्हाट्स द मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ इशूइंग कमर्शियल पेपर्स? आई गेस वी हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन. ठीक है, आसान क्वेश्चन. इसको क्या करेंगे? 5 लाख सबको पता ही है, छोड़ो आगे बढ़ो. व्हाट्स द प्राइमरी इशुएंस सेटलमेंट पीरियड? ये भी कर ही रखा है, T+4 वर्किंग डे. अगेन रिपीटिंग, सो लेट इट बी 42 ऑल्सो सी. सब अपने आप को 2-2 नंबर और दे दो. नेक्स्ट, what is the minimum credit rating required for issuing commercial papers and non-convertible debentures? That's an important question. What's the minimum rating? काश एग्जाम में भी कहाँ होता है एग्जाम में. 43C, yes, correct answer. But sometimes even in exams वो थोड़ा application based या फिर option से related एक आध question तो फंस ही जाता है. Next is, when can issuers buy back commercial papers and non-convertible debentures? What's the timeline with respect to after only which these people can buy back these debt instruments? 44th, everyone. Yes, all of you are correct. After 7 days from the date of issue of commercial papers. And why is it? क्योंकि हम लोगों ने बेसिक मेच्योरिटी तो पढ़ी ही थी ना. व्हाट्स द मिनिमम मेच्योरिटी इन अ कमर्शियल पेपर? 7 days. तो 7 days की मिनिमम मेच्योरिटी करने के बाद ही तो देगा वो. नेक्स्ट, who are eligible investors for investing in commercial papers and non-convertible debentures? Yes, easy question. All residents of India, non-resident subject. Next, what is the minimum tenure for a commercial paper? 7 days. अभी बता ही दिया मैंने. ठीक है, क्या कर रहे हैं? चलो एक एक नंबर और बढ़ा लेना भाई आप लोग. अब देखो एक एक नंबर सबका बढ़ रहा है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कट ऑफ तो बननी है. ठीक है, रिपीट तो नहीं हुआ, खैर वो मैंने बता दिया बस. नेक्स्ट, अब मैं समझाऊंगा नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. विच प्लेटफॉर्म इज यूज्ड फॉर पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ डिफॉल्ट रिलेटेड टू कमर्शियल पेपर्स एंड एनसीडीज?
27th. Yes, all of you are correct. C, F-Track Trade Repository Platform. बहुत बढ़िया. Next is, what's the maximum maturity period for commercial papers? Another easiest question. ऐसी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, फिर सबके नंबर आ जाए. चलो, 1 साल. Short term securities only. What defines an inoperative account according to revised instructions? How do you define an inoperative account? हाँ, कट ऑफ हाई जाएगी, सही बात है, करेक्ट. एंड हु वांट्स कट ऑफ हाई? नोबडी वांट्स इट. 49th everyone. Yes, correct. B is the correct answer. A savings or current account with no customer induced transactions for over 2 years. ठीक है? Be very clear about what type of transactions are not being noted here. Next is, what defines unclaimed deposits as per revised instructions? जितने भी लोग सर्कुलर के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, एवरीबडी इज हार्ड वर्किंग. Yes, correct. All of you are correct. D is the correct answer. Term deposits not claimed within 10 years of savings. Then it is, what's the minimum tenure required for term deposits in domestic currency? एंड यस, रोहित इज करेक्ट. इन डेप्थ ही पूछ रहे हैं आजकल. ठीक है, अब देखो एक्सपोजर नॉर्म्स के अंदर अभी तो जनवरी का है. ठीक है, देन आई विल मेक फरवरी में बहुत सारा पीपीआई से रिलेटेड, यू नो, यू हैव अ लॉट ऑफ डेटा विद इन दोज सर्कुलर्स. फरवरी के सर्कुलर्स के एमसीक्यूज में मजा आएगा. चलो, यस, करेक्ट आंसर इज 7 days everyone. नेक्स्ट इज, व्हेन डज द डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट अप्लाई फॉर डोमेस्टिक रुपी सेविंग्स डिपॉजिट्स? Yes, correct. B is the correct answer. Let's move on to the next. What discretion do cooperative banks have regarding additional interest on deposits? Take your time, see the question. देखो, जब डिस्क्रेशन होता है तो ऐसे अगर आपको कीवर्ड दिख जाए मस्ट, है ना, तो उसको तो सबसे पहले ही काट दिया करो. Whenever anybody is providing you discretion, that means it's your choice. तो कैन वाला होता है ना. Yes, the correct answer is E. They can allow additional interest to staff their exclusive associations and managing director. Next is, what's the minimum deposit required for term deposit without premature withdrawal option in cooperative banks? 54th. Yes, all of you are correct. 1 CR is the correct amount.
What interest rate applies to deposits held in current accounts? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, बेसिक बैंकिंग, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स. करंट अकाउंट में आपको कितना मिलता है इंटरेस्ट रेट? Is correct, no interest rate. What's the maximum periodicity with which internal ombudsman should furnish reports on his or activities to the committee of the board handling customer service and protection? (56th) Rohit Singh quarterly, travel with SKB. 56th Pappu saying E, Kaustubh saying A, Kaustubh ने हटा दिया. 56th E, Vinay Joshi B. देखो भाई, correct answer is E, semi-annually, because I've asked what's the maximum periodicity. उन्होंने बोला है quarterly आपको देना है, लेकिन not going beyond half yearly, or you can say semi-annually. ठीक है? Do read the question. Next is, what's the maximum age limit for internal ombudsman, deputy internal ombudsman before completion of their tenure? Yes, correct. बहुत बड़े. C, 70 years. What is the tenure of internal ombudsman in a regulated entity? 58th, everyone. Yes, correct answer is B, 3 to 5 years. बहुत बड़े. Which department of Reserve Bank of India should be informed in case of temporary absence of internal ombudsman exceeding 15 working days? Yes, all of you are correct. Again, very well done. Consumer Education Protection Department. What's the minimum overlap period required for incoming and outgoing internal ombudsman during appointment process? ये हम लोगों ने पढ़ा था ना कि किसी नए इंटरनल ऑम्बुड्समैन को बुलाने से पहले आप एक टाइम पीरियड का ओवरलैप रखिए, सो दैट द न्यू पर्सन ऑल्सो गेट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द प्रोसेस इज. Yes, correct. C is the correct answer. 1 month overlap. In order to be eligible as a credit risk transfer instrument, the guarantees shall be. तो जो भी आप गारंटी दोगे एज अ क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, व्हाट शुड बी द criteria? 61th, everybody is saying C, D. Yes, D is the correct answer. ठीक है, अगर आप लॉजिकली भी देखोगे, डायरेक्ट होनी चाहिए, एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, इररेवोकेबल एंड अनकंडीशनल. ठीक है, रेवोकेबल हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं है, इम्प्लिसिट में आप क्लियर मीनिंग दे नहीं रहे हो. ठीक है ना, ऑल दोस थिंग्स. Next is, what's the minimum regulatory net owned fund required for NBFC's ICC by March 31st, 2027? उसका आंसर है D. ठीक है. 62nd, everyone. Minimum regulatory net owned fund requirement for NBFC ICC investment and credit companies. Yes, correct answer is D, 10 CR. What is the deadline provided to NBFCs in the base layer to adhere to 90 days NPA norms? (63rd) everyone. Yes, correct answer is C. बहुत बढ़िया.
March 31st, 2026. Minimum regulatory net owned fund requirement for NBFCs, MFI in Northeast region. Sixty-fourth. Cost of saying B, A, अलग-अलग आंसर्स आ रहे हैं. The correct answer is 7 CR. ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर. और ये सारा डेटा वो जो टेबल पड़ी हुई है ना आपके एनबीएफसी के सर्कुलर में, वहां मिलेगा आपको. ठीक है, डू नॉट लीव द टेबल्स एज वेल. विच एनबीएफसीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कंसंट्रेशन नॉर्म्स? Yes, correct. The correct answer is D, fully guaranteed by Government of India. Next is, which type of claims attract a 0% risk weight for capital computation? Yes, sixth A correct answer. Central government guaranteed claims. स्टेट गवर्नमेंट में कितना रिस्क वेट रहता है? एनीवन? व्हाट्स द रिस्क वेट एसोसिएटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट गारंटीज? Yes, all of you are correct. 20%. एंड यस, इसका आंसर 5 करोड़ है. माय बैड. ठीक है, इफ यू लुक एट नॉर्मली तो म्यूचुअल फंड वाले कैटेगरी में 7 करोड़ है. ठीक है, बट इफ यू लुक एट इट नॉर्थ ईस्ट रीजन इट इज 5 CR. सो करेक्ट आंसर विल बी 5 CR. नेक्स्ट 67th. What's the main objective of guidelines issued by Reserve Bank of India regarding reappointment of statutory auditors? Be very clear with respect to what the circular wrote about it. Everybody is saying B. Yes, B is the correct answer. To ensure independence and accountability of auditors. बहुत बढ़िया. When do the guidance on appointment and reappointment of statutory auditors come into effect? बहुत बढ़िया. C is the correct answer. April 1st, 2024. How often should banks seek prior approval from Reserve Bank of India for the reappointment of statutory auditors? Sixty-ninth. Everyone. RBI से reappointment के लिए permission कब कब चाहिए? saying B, Vijay saying B, mostly B, Kumar Blue saying A. What about others? और किसी को कोई और आंसर देना? When I skipping, ठीक है. The correct answer is B only. Annually they need to take care. Next is, what's the maximum tenure for which statutory auditors can be appointed at a time? Everyone, what's the correct answer?
70C3 नहीं, एट अ टाइम पूछा यार, स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स मैक्सिमम तो एक पर्टिकुलर बैंक में कितना है? The correct answer is 1 year only. ठीक है, एट अ टाइम एक बार में 1 साल का अपॉइंटमेंट मिलेगा और मैक्सिमम 1 साल और करके 2 साल का अपॉइंटमेंट. ओके, 1 year is the correct answer. Next is, what's the main objective of Master Circular on Exposure Norms, Statutory and other restrictions for urban cooperative banks? Everyone, what's the correct answer? 71. Yes, ठीक है. आप लोग ये सब चीजें बिल्कुल मान के चलिए कि अगर पर्पस के रिगार्डिंग पूछ लिया जाए तो वट एवर द लैंग्वेज हैज बीन मेंशन्ड इन द सर्कुलर, यू ऑल्सो हैव टू मार्क दैट ओनली. Next is, what's the maximum exposure limit to an individual borrower in relation to UCB's Tier 1 capital? ये तो कितनी अच्छे से कराया था, ठीक है, किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए. Yes, correct everyone. 15% of the Tier 1 capital. What's the limit on unsecured advances granted via UCB to its members as per aggregate ceiling on the unsecured advances? Another easy. 73. Papu saying B, Rohit saying B, Nitin also saying B, travel with SK saying B. 4 B आ गए. और कोई डिफरेंट लेके आ रहा है क्या? अविरल लेके आया E. ओके, चलो, करेक्ट आंसर इज बी ओनली. 10% है अनसिक्योर्ड एडवांसेस का. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द एडिशनल लिमिट ग्रांटेड टू यूसीबी फॉर ग्रांटिंग हाउसिंग लोन्स टू इंडिविजुअल्स विद प्रायोरिटी सेक्टर एलिजिबिलिटी लिमिट्स? कितना एक्स्ट्रा दे रखा है? So everybody is very clear with respect to this. So 5% सबको पता है, but apart from 5%, what's the original use case? Normally housing के लिए कितना सीलिंग है? Is correct everyone? 10%, 10% के ऊपर फिर 5% एक्स्ट्रा. गुड, ठीक है, ये सारी चीजें हमने दिमाग में रखो. नेक्स्ट इज, व्हाट्स द मैक्सिमम परसेंटेज दैट यूसीबीज कैन एलोकेट टू क्रेडिट कार्ड लिमिट्स? So 75th, Papu saying D. What about others? When I saying D, D, D. बाकी सबका भी D आंसर है. Or everybody is skipping other than those who are answering? D is the correct answer, 10%. What is the maximum percentage of total deposits that UCBs can place in any single bank? Yes, all of you are correct. बहुत बढ़िया, 5% maximum. Next, what type of loans are exempt from the purview of instructions regarding director related loans for UCBs?
77 everyone. We're all saying E, Rajshri also saying E, travel with saying बहुत बढ़िया. Yes, correct answer is E only, loan against government securities. What is the maximum amount on which unsecured loans sanctioned by UCBs are exempted from the aggregate ceiling on unsecured exposure? कितना maximum allow कर रखा है exemption? Yes, it was the special use case, अगर आप लोगों को याद होगा, ठीक है, जो वो पुराने वाले लोन्स थे, ठीक है, उसमें एक एग्जेम्पशन की लिमिट दे रखी थी, which was 10,000, which all of you rightly mentioned. Correct answer. What's the maximum limit of exposure of UCBs to housing loans as a percentage of their total assets? अब अगेन वही गलती कर दी मैंने, पूछ लिया आप लोगों से. ठीक है, क्वेश्चन हो गया रिपीट. चलो खैर, करेक्ट आंसर. अब तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का. बहुत बढ़िया, 10%. Next is, what's the main objective of revising eligibility norms for inclusion of urban cooperative in second schedule? Objective क्या था? $80 everyone. Yes, ठीक है, लॉजिकल है, to align with the revised regulatory framework. ठीक है, ये सारे तो नेगेटिव हैं. टू रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ यूसीबीज क्यों करेंगे भाई? टू डिक्रीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पागल थोड़ा है. टू इंक्रीज रेगुलेटरी बर्डन, बर्डन इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड. टू ब्रिंग यूसीबीज इन कंफर्मिटी विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. अरे पहले डोमेस्टिक स्टैंडर्ड ही कर लें, फिर ले चलेंगे इंटरनेशनल. नेक्स्ट, what is the minimum period for which UCBs must maintain deposits required for categorization as Tier 3 Urban Cooperative Bank to be considered as eligible for inclusion in second schedule? आएगा पप्पू, एक दिन आएगा जब UCBs को इंटरनेशनली ले जाएंगे. UCBs will become multilateral development bank, just like ADB and all those things. चलो, so 81, Vasu saying C, Rohit saying C, Vargo saying B, travel with SKC. So only Bhargav is correct. 2 consecutive years is the correct answer. Next is, according to the revised criteria, what's the maximum permissible limit of net NPA to qualify as financially sound and well managed? This is the most easiest question that anybody can get. 4-5 बार देख लिया इसको. यूनिवर्स क्रेडिट बैंक, हाँ मार्स पर तो जा ही रहे हैं. Is correct everyone. 3% is the correct answer with respect to net NPA, 7% with respect to gross NPA. Which of the following is not required for UCBs to qualify for financially sound and well managed status? ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि 2-3 सर्कुलर में आ चुका है, तो आपको सारे डिटेल्स पता रहेंगे, तो इट विल बी मच बेटर. तो फाइंड द इनकरेक्ट वन. Yes, C is the correct answer. Implementation of manual banking system is not the right answer. Core banking solution was there. Who have been permitted to remit advance payment on behalf of qualified jewelers for import of gold through India International Bullion Exchange? Yes, बहुत बढ़िया. 8 authorized dealer category 1 banks. What is the duration for which advance payment remittance is permitted for import of gold by qualified jewelers? Everyone, 85th. हाँ, ये तो सबको ही पता है. Well done, बहुत बढ़िया. 11 days is the correct answer. So this is all for today.
and I must say I'm very happy that all of you performed very well with respect to this, MCQ session. बहुत बढ़िया. What's your average score, or what's your score? At least tell me, so that at least I get to understand that on an average how this 30 batch did. ऐसे ही कर लेंगे. जनवरी हो गया, उसके बाद वील बी डूइंग फेब्रुवरी. तो देखो सर्कुलर्स अच्छे से पढ़ ही रहे हैं, अंडरस्टैंड उसको कर ही रहे हैं. सर्कुलर्स के एमसीक्यूज भी कर लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली जीए विद रिस्पेक्ट टू आरबीआई विल बी ऑटोमेटिकली डन. फिर एक मैं सेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू कंबाइंड सर्कुलर्स ऑफ सेबी और जितने भी अदर रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका सर्कुलर्स ले लेंगे. सो वो भी हो जाएगा. पप्पू 76/85, बहुत बढ़िया, गुड. पहले तो ये बताओ दुखी आत्मा क्यों नाम रखा हुआ अपना. आप सर्कुलर्स के लेक्चर्स देख लो और ये एमसीक्यूज कर लो, इट्स मोर देन इनफ. 6 रॉन्ग 6 स्किप. यार देखो 85 में इफ यू आर रॉन्ग और स्किप आर विद इन द 10 to 20 रेंज, इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया. ओके कॉस्ट. Amit, I already have lectures with respect to RBI circulars, तो देख लेना. Bhargav, I'll try to do it. ठीक है, जैसे I'll get space with respect to that, we'll do that. $76 correct for skip. 65 प्लस स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला दोबारा देख लेना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला. ठीक है, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन वी विल रेक्टिफाई इट इन द क्लास और लेट्स से इन द नेक्स्ट सेशन. एनीथिंग एल्स इफ एनीबडी वांट्स टू आस्क प्लीज आस्क, अदरवाइज वील वाइंड अप दिस सेशन. आप लोग भी एंड हैप्पी होली टू एवरीवन. अच्छे से होली मनाइए. गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 2 days ब्रेक. यू डिजर्व एटलीस्ट आफ्टर दिस परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ यू डिजर्व 2 days ब्रेक. ठीक है, and then recharge yourself, celebrate Holi, and then फिर लग जाओ इसमें दबा के. I appreciate it, Rajshri. Thank you. Yes, Shreya. Feb session भी हो गया ऐसी. Happy Holi blue. So Kumar blue, you will be utilizing blue. गंदा पीछे था, sorry. Blue गुलाल. ठीक है. क्या सेफर साइड के लिए दिसंबर मंथ्स का सर्कुलर कर सकते हैं क्या? SKL देखो, जब क्या कहते हैं फेज 2 होगा ना, फेज 1 में तो 6 महीने से ज़्यादा क्या पूछेंगे यार. फेज 2 के लिए दिसंबर मंथ में इफ देयर विल बी एनी इंपॉर्टेंट सर्कुलर ना, आई कवर इट, सो डोंट वरी. हाँ, फेब में PPI वाला अच्छा खासा है. ठीक है, तो ये तो बेसिकली ट्रीट दिस सेशन लाइक अ वार्म अप सेशन. फिर फेब्रुवरी का मैं थोड़ा अच्छे से बनाता हूँ. आई विल मेक सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आल्सो. ठीक है, तो फिर उसको करना. आज जितने अच्छे नंबर आए ना, नॉट टू डिस्करेज यू बट टू इंक्रीज योर थिंकिंग कैपेबिलिटीज एंड ऑल दोस थिंग्स. पहले रिपोर्ट्स का वील डू सेशन रिगार्डिंग लेक्चर, एक थोड़ा सा उसका डिस्कशन रिगार्डिंग लेक्चर करेंगे. आफ्टरवर्ड्स वील डू इट MCQ सेशन. Rashi, I'll tell you in the next week only. ऐसा भी नहीं करेंगे कि बता दिया मैंने फिर सेशन ही ना लूँ. That would not be appropriate. चलो
थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। किसी का आया बड़ा सा क्वेश्चन, सर इन फाइनेंस नोट्स ऑन इन्वेंशंस कैन बी बोथ अनसिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड बाय सर्कुलर। अब फाइनेंस में सॉरी, if you look at in context of circular is a specific directive to a specific kind of instruments. All of us know कि डिबेंचर शॉर्ट टर्म भी होते हैं, लॉन्ग टर्म भी होते हैं, बट सर्कुलर में जो भी डायरेक्टिव दिया वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए दिया है। इट डजंट मीन कि दूसरा एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। तो आप इस हिसाब से इसको ध्यान में रखना। ठीक है, चलो, थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन स्टे सेफ, हैप्पी होली एवरीवन। ठीक है, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आप लोग ब्रेक लीजिए, विल मीट ऑन ट्यूसडे। ओके, थैंक यू।